अच्छा, oxidation of carboxylic acids. और उसमें खाली ये कि the only thing that you have to know is कि specifically methanoic acid. ठीक है, so methanoic acid is HCOOH that gets oxidized with toluenes or filling. That's it. ठीक है, that's it. Or form, you don't need to remember the whole equation, but at the end of the day, it's going to be carbon dioxide and water, etc. that would be formed. And the other one is oxidation of ethane dioic acid. Ethane dioic acid is a double carboxylic acid. It has two carboxylic acid groups. So दोनों side पे ना there is a carboxylic acid group and it gets oxidized. And it gets oxidized by KMNO4. Acidified and reflux. और ये भी बस carbon dioxide or water उनके अंदर बस this is the only thing you need to know. Okay, there's going to be oxidation, but oxidation of only these two carboxylic acid. One is this one, the other one is this one. So two of the carboxylic acids can get oxidized. So that's the only thing you need to know. अच्छा, उसके बाद है कि we can continue with the past papers जो हम कर रहे थे, and we have to practice a lot of past papers. ठीक है, वो topic wise, बल्कि कोशिश करेंगे पूरे past papers भी उसमें we'll come back to organic over and over again. अच्छा, इधर से start कर लेते हैं, पीछे notes भी खोले हुए, तो मोल्स का छोड़ देते हैं, ये भी वही चल रहा है. अच्छा, this is biodiesel. Question ये कि ठीक है, we would have to. The question is कि I think in the question biodiesel is being produced from dried algae. So if you produce biodiesel, ठीक है, this question, if you produce biodiesel from dried algae, that's a ये कौन सा वो renewable, it's a renewable resource. Plus does not increase net carbon footprint क्योंकि algae जो है वो obviously it's going to convert carbon dioxide to oxygen, but it's a green substance. Its photosynthesis would happen over here, so does not increase carbon footprint. ठीक है, so remember the question is, पिछला part मैंने ignore किया है. The question is he's trying to make biodiesel from dried algae. So it's a उसमें photosynthesis चल रही है, which is why it's going to be net carbon footprint जो होगा ना इसका zero होगा, क्योंकि बाद में जब जाके ना biodiesel को if you make biodiesel, let's say biodiesel has been made and then you burn it to produce energy, so oxygen gets converted to carbon dioxide. So net result would be zero. Okay, in one process when algae is being formed, carbon dioxide is getting converted into oxygen. But once biodiesel has been formed and it's burnt, it's formed back into carbon dioxide. So the net effect is going to be zero. Fossil fuels के साथ ये नहीं होता. Fossil fuels don't have zero carbon footprint क्योंकि fossil fuel जब आप earth से निकालते हो ना, it's not renewable. It's you burn it, it produces carbon dioxide, and that's it. दोबारा fossil fuels वापस नहीं बनते. मतलब not it's going to take billions of years to make fossil fuels back again. तो इसका part का answer था कि नीचे वाले part का कि biodiesel is an expensive process, but why is it important? ठीक है, कि why you need to make biodiesel from algae. आयशा, clear है बात? मरीम? The next one is each of the following structures is an 8-atom segment of the chain of a commercial polymer. For each structure, decide whether it is a part of a condensation or an addition polymer, and draw the structural formula of the monomer from which the polymer is made. So नीचे ना ये दिया हुआ है. Now you can clearly see that this one, the first one,
उसके अंदर linkages find out करो. The linkages is, this is an amide link, but it is this serial bond O. ठीक है, so you have serial bond O, and on the other side you have N and H. And now amide links are formed when you have कहाँ पे शो किया था हमने last time, इधर ही देखते हैं, इधर top पे ये linkages थी, peptide links वगैरह, we studied this. Monomers, they joined together, बीच में से H और OH निकला था, and then you had this amide link that was formed in between. ठीक है, so there's an amide link. अब इसको वापस तोड़ो तो वापस monomer बन जाएगा. So we have to break the amide link back again. So if you go back, so I know okay, I need to break it from this point onwards. अच्छा, और कहाँ तक तोड़ूंगा? From the to the other amide link. Find the other amide link. The other amide link is over here. ठीक है, serial bond O and there's NH. इसको भी वापस तोड़ो, ठीक है? तो ये जो बीच में जो पोर्शन आ रहा है ना, that's basically your monomer. मतलब बीच में जो पोर्शन आ रहा है, if I draw this portion, it's going to be बीच में there's CH2, two CH2s are in the middle, and if you look over here, उसके two CH2s, and on one side there's NH, and on the other side there's NH as well. So it's basically amines होंगे दोनों sides पे. ठीक है, so this is one of the monomers. अच्छा, लेकिन obviously amides are not made from just one monomer. There has to be another monomer. तो और कोई link ढूंढो, amide link, and break that as well. So I'm going to break another amide link. So here's another amide link. ये serial bond O and NH, and I'm going to break this over here. Now again, ये जो middle में चीज आ रही है ना, this one, that's your other monomer. ठीक है, दो C's हैं, इसके साथ भी double bond O है और दूसरे के साथ भी there's double bond O, and on both sides there's carboxylic acid. यहाँ पे भी OH है और दूसरी साइड पे भी there is OH. So these are the formula of the monomers. Two monomers, one is a diamine. Amide इसी तरह बनते थे. There was diamine and there was dicarboxylic acid. अगर sorry. So if you go back and have a look, जो हमने last time, अच्छा जो हमने last time किया था, इसके अंदर तो बहुत नीचे. So we have to अच्छा ये probably amides थे, ये नहीं थे. नहीं, this is proteins. अच्छा उसी के अंदर पड़े थे ये amides. नहीं उसमें, अच्छा वो हमने सारा पढ़ना शुरू कर दिया था. अच्छा, so this is your carboxylic acid, dicarboxylic acid, and this is your diamine. ये clear है? मरी मिसेस clear है? अबू रहना clear है? Yes, sir. अच्छा, अगले वाले के अंदर भी remember there was polyester as well. So what happened in polyesters? Polyesters के अंदर there's an ester link, ठीक है? So if you look carefully, this over here, दो type के condensation polymers थे. This is a polyester molecule. A polyester molecule में, and then there's, अच्छा it's, now this is a repeat unit, ठीक है? If you have square brackets over here, that means कि the molecule after the square bracket it starts to repeat again. तो इसके अंदर कोशिश ये किया करो कि sometimes a partial structure is shown. When that is done, कि अभी इसमें ना clearly we can only see one ester link, which is this one, and I'm going to break it. ठीक है, ester link भी वापस तोड़ेंगे to find the monomer. But there is no other ester link. तो एक काम किया करो कि इसको दोबारा repeat किया करो, ठीक है? If I start repeating this, इस side पे ना I'm going to start repeating the whole chain from this point onwards. तो यहाँ पे क्या होगा? It's going to be serial bond O. फिर वो दोबारा से there's going to be CH. नीचे bottom पे there's CH2.
ठीक है, so this is the repeat unit that's repeating again. फिर CH2 है, फिर O है, then there is C double bond O, and then there is CH, and then bottom पे there is CH3. तो मैंने दो दफा repeat कर दिया इसको, ठीक है, so it's been repeated twice. I said the only purpose of repeating it twice is that I can identify the monomers. I'm going to break the ester link. एक यहाँ से तोड़ा. Where's the other ester link? The other ester link is over here. तो इसको हम, let me choose another color. अच्छा, this is the other ester link. ठीक है, now I can see the ester link. इसलिए फायदा हुआ है कि draw the repeat unit again. ठीक है. Now you can see clearly कि if you break the ester link on both sides, this middle में that's going to be your residue, or that's going to be your monomer. So I'm going to draw this. ठीक है, तो नीचे draw करो. So it's एक side पे there is C double bond O, then there is CH, then there is bottom पे there is CH3. ठीक है, अभी I've drawn this part, and then there's CH2, and then there's an O. Remember that when you're making a polyester is made from carboxylic acid. Ester links are made from carboxylic acid. ये वाली side जो होगी, that's going to be a carboxylic acid. The other side would be an alcohol. So that's basically H or OH remove होते थे. So that's going to be your one of the monomers. Mariam, is this clear? Abdullah, clear है? Yeah. Achha, anyways, that's one of the monomers, ठीक है? And there's supposed to be another monomer as well. So find the other ester link. Here's another ester link. Break that as well. और उसके बीच में ना जो कुछ भी है ना, till the other ester link. ठीक है? This was the ester link and this was the ester link. तो ये बीच वाला ना, that's going to be the monomer as well. So ये वाला क्या है? It's C double bond O, and then there is CH, and फिर bottom पे there is CH2. Then you have CH3. Then you have CH2 and O. And इस side पे there's going to be a carboxylic acid. वो single O वाली side पे there's going to be an alcohol. ठीक है, so this is both of these are condensation polymers. The first one was a polyamide. And the second one was a polyester. Okay, so both of them are condensation polymers. I said then move to the last one. I said last one there is no linkage. Okay, there's absolutely no linkage. So ये क्या चीज होगी last one? I'm going to give you an example of this. मतलब पहले उल्टा monomer से draw कर लेते हैं. This is AS क्योंकि addition polymerization है basically. So let's go back and draw a few addition polymers. पता नहीं इधर नीचे एक दो examples करते हैं. अच्छा, how are addition polymers formed? अच्छा, addition polymers में you had alkenes, unsaturated compounds होते थे. For example, you have butene. अच्छा, उससे ना polymers बनते हैं butene से. तो how would you make polybutene? Butene में ना there would be 3 carbon atoms, carbon, 4 carbon atoms, and there's going to be a double bond over here. And इसके साथ 3 H होंगे. इसके साथ top पे there's going to be 1 H. Over here there's going to be an H as well. अच्छा, इसमें करते क्या थे? How would you make a polymer? You would first thing is double bond के ना right और left पे कुछ नहीं होना चाहिए. So you're going to bend this downwards, and this over here would also be bent downwards. तो ये बीच में double bond के right और left पे कुछ नहीं होना चाहिए. So CH3 that was over here would be drawn downwards, and the CH3 over there was also going to be bent
downwards, and then you're going to have all these monomers, and they're going to link up. So double bond would break and they would all get connected to each other और फिर वो बस चलता रहेगा इसी तरह. अच्छा खैर, the point is कि what's important, जो मैं point basically बता रहा था कि there's a continuous carbon chain, nothing in between, there's no linkages. ठीक है आयशा, ये clear है? अबूरा clear है? मयम कि अच्छा तो exactly यहाँ पे भी है, it's if you look over here, it's carbon 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 carbon, zigzag पता नहीं क्यों बनाया हुआ है उन्होंने, वैसे ही confuse करने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन it's just one straight carbon chain, that's it. तो वापस मोनोमर किस तरह ढूंढते हैं? मोनोमर इस तरह ढूंढते हैं कि वो बीच में ना दो कार्बन के जो पेयर्स है ना उनको तोड़ना शुरू कर दो और वापस बीच में ना you start adding the double bond. ठीक है, and that is exactly what we are going to do over there as well. कि what I'm going to do is कि I'm going to break, randomly कर लेते हैं कि ये वाला साइड वाला बॉन्ड टूट गया और इस कार्बन के उधर वाला बॉन्ड टूट गया. These two are going to have a double bond in between. ठीक है, so let's look at this molecule. ठीक है, that's going to be your monomer. So it's CO NH2 ऊपर था, अच्छा क्या नीचे CH और इस साइड पे there's CH2 और दोनों के बीच में ये put a double bond there. And you can अच्छा you can do the same. और कौन सा मोनोमर है? फिर अगले दो कार्बन्स के जो पेयर्स हैं, ये वाली साइड तो वैसे ही तोड़ दी है, उस साथ वाले कार्बन का ना अगला बॉन्ड चेन में लिंक, you break it up and you put a double bond in between. So it's going to be CH2 and there's going to be double bond CH और वो ऊपर ना there's वो बेंजीन बना हुआ है. ठीक है, so बस ठीक है, there's going to be a benzene. Anyways, the whole thing would so these are the two monomers that are making this up. Abdullah, clear है? Abdullah, clear है? Wait, so sir, will the benzene ring be a part of another monomer? They're basically two monomers, two different monomers. I mean, it's obviously two different. I mean, the repeat unit is not the same. I mean, you can clearly actually I think there might be a third monomer. But do you understand this part, right? I mean, your confusion is what, okay, there's the two different monomers, right? Yeah. Check. कितने मोनोमर है? इसके टोटल अच्छा ये रिपीट यूनिट है ना, तो हम इसको थोड़ा सा ना दोनों साइड पे रिपीट भी कर लेते हैं और थोड़े लिंक्स तोड़ते हैं ताकि वो पता लगे कि रिमेंबर दिस कि वो जो मैंने वहां पे सिखाया था, किधर गया, यहाँ पे कि दो कार्बन एटम्स के ना ग्रुप्स बना लो, वो बीच में ना लिंक्स तोड़ते जाओ. ठीक है, यू स्टार्ट ब्रेकिंग दोज लिंक्स. इसको मैं आगे अगर कंटिन्यू करूँ ना तो इस साइड से ना आई स्टार्ट रिपीटिंग इट अगेन. सो इट्स CH2 और फिर CH2 इस साइड पे ऊपर टर्न कर रहा है, फिर CH एंड देन देयर CO NH2 टॉप पे और फिर नीचे दोबारा CH2. व्हाट हैपेंड? एक सेकंड. अच्छा नीचे वन सेकंड. अच्छा नीचे दोबारा CH2. है, दिस थिंग इज रिपीटिंग. दो ही मोनोमर? नहीं, मेरे ख्याल से एक और है, क्योंकि दो ही है. मुझे तो दो ही लग रहे हैं. नहीं, क्योंकि यहाँ से तोड़ोगे फिर यहाँ से तोड़ोगे तो ये एक बीच में एक और चीज बनेगी जो कि इसको तो यहाँ से डिवाइड कर दें, ये ऊपर था. नहीं, एक और मोनोमर बन गया. मतलब CH2 है, वो डबल बॉन्ड डाल दो दोनों के बीच में, CH है और ऊपर CH3 लगा हुआ है. अब वो क्लियर है? यस सर. तो एक तीसरा मोनोमर बन गया. ये फिर दोबारा आगे तोड़ोगे ना तो ये जो पार्ट है ना ये वो रिपीट होगा, मतलब ये हम कर चुके हैं. ठीक है, क्लियर है?
अब पूरा क्लियर है? यस सर। ठीक है, बनिए बिजनेस क्लियर। Yeah. तो इसमें there were 3 different monomers. खैर उसने probably आंसर के अंदर सिर्फ एक ही मोनोमर आइडेंटिफाई करने को कहा था. I don't think there was, नहीं उसने फॉर्मूला ऑफ मोनोमर्स सारे मोनोमर्स मांगे हुए थे और बस पूछा हुआ था कि is this addition or condensation. अच्छा नेक्स्ट वन. फार्मूला ये बना के बताना। हाँ हाँ ये ड्रॉ करना है या वो जगह कम है तो ऑब्वियसली उसको कंडेंस करके भी लिख सकते हो. अच्छा this one state and show using suitable diagrams the types of bonding that occur in the primary, secondary and tertiary structures of a protein. तो ये उसने सारे स्ट्रक्चर्स जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं वो सारे मांगे हुए हैं. किधर ड्रॉ किए थे? ये ऊपर ड्रॉ किए हुए थे. प्राइमरी के अंदर ये शो कर दो. उसने खुद ही कहा रैंडम स्ट्रक्चर्स जस्ट ड्रॉ अमीनो एसिड 1 2 3 कनेक्ट कर दो. दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर. ठीक है, इट टेल्स यू द सीक्वेंस. सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसमें थोड़ा सा ना ये शो कर देना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स. ड्रॉ ईच वन ऑफ ईच. अब फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर शो कर दो. इसका बल्कि चेक कर लेते हैं कि अच्छा इसका हम चेक कर लेते हैं. ये कौन सा पेज है? दिस इज 248. रिमेंबर 248 और क्वेश्चन नंबर 5 है. इसका हम देख लेते हैं हाउ डिड ही आंसर, क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं दी हुई. अच्छा इसे भी 315. अच्छा क्वेश्चन नंबर 5. और अच्छा हाँ ये पिछले का आंसर उसने वो ड्रॉ करके नहीं, उसने मतलब वो स्ट्रेट लिंक बना के. मैंने तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड I had made these carboxylic acid on both sides. ठीक है, तो उसने वो कंडेंस करके लिखे हुए सेम चीज. अच्छा क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में प्राइमरी के अंदर वो कह रहे कि डायग्राम शोइंग पेप्टाइड बॉन्ड्स, मतलब उसी तरह का ना जिस तरह वहां पे ड्रॉ किया हुआ है लाइक दैट. फिर सेकेंडरी के अंदर ही इज जस्ट सेइंग कि शो हाइड, मतलब ही इज नॉट इवन टॉकिंग अबाउट अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स. The only thing he's asking for is कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर, which is कहाँ पे हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ये मैंने शो किया हुआ था. मैंने इसको enlarge करके मैंने बताया था कि the coiling is happening because you have these hydrogen bonds between the structure. खैर स्पेस ज्यादा नहीं दी हुई उससे. और टर्शी के अंदर उसने कहा था टू ऑफ द फॉलोइंग शो करो द टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस. तो उसने कहा था हाइड्रोजन बॉन्ड्स अदर देन दोज इन अल्फा हेलिक्स और बीटा. अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स पिछले पार्ट में थे. तो आयोनिक अट्रैक्शन, वैन वाल्स फोर्सेस, उसने कहा था suitable diagram of one of the above, but again they hadn't given enough space. अच्छा वापस आते हैं टू. तो बस इतनी सी स्पेस में सब कुछ करना था. अच्छा next one is this one is kind of a tricky question के not a tricky question actually, it's बस कॉमन सेंस है. वो कह रहे हैं कि एनालिसिस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड. पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? उसके अंदर अमीनो एसिड्स, एन टर्मिनल एंड इज उसने कहा कि मेट जो भी है, एंड द सी टर्मिनल. आई टोल्ड यू कि वो द कन्वेंशन इज के एन को इस साइड पे रखते हैं, मतलब NH2 को, और फिर अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस होती है. ठीक है, सो देयर इज अमीनो एसिड 1 LYS जो भी उसके वो 3 लेटर एब्रिविएशंस हैं, और यूं करते करते ना देयर इज दिस सी टर्मिनल एंड. ठीक है, तो you reach the C terminal end. अब there's lysine, there's met. अच्छा enzymic hydrolysis of the polypeptide produced. उससे क्या है, जब polypeptide टूटे ना, so let's assume कि there are lots of amino acids in this chain. Now he's saying कि there's hydrolysis that's happening. कोई enzyme use किया and it's breaking up. Now if that hydrolysis takes place, तो क्या हो रहा है? उसने कहा कि ट्राइपेप्टाइड्स बन रहे हैं. ट्राइपेप्टाइड्स का मतलब है कि ये जो चेन है ना, दिस इज ब्रेकिंग अप इनटू ग्रुप्स ऑफ 3. तो ट्राइपेप्टाइड, उसने कहा द फॉलोइंग ट्राइपेप्टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड. और उसने ये भी कहा है कि
ये जो चेन थी ना उसकी जो लेफ्ट साइड है ना वो मेथियोनीन है, मेट जो भी है, और उसकी जो राइट साइड है ना जो सी टर्मिनल एंड उसका जो ये जो आखिरी अमीनो एसिड है ना दैट इज LYS, ही इज ऑलरेडी मेंशन दैट, और ये वाला फर्स्ट वाला जो है ना दैट्स जो भी है मेथियोनीन। अच्छा खैर, and he has said that the following, when this is broken down और randomly broken down होगी, ठीक है, यहाँ से टूट गया तो ये 3 अमीनो एसिड बन गए, ठीक है, so it's going to be a random breaking up of the chain. कहीं यहाँ से बीच में से ट्राइपेप्टाइड टूट गया, so that could be one amino acid, so it could be randomly 3 amino acids, a group of 3 amino acid could be randomly breaking apart, ठीक है, ये टूट सकता है ये, तो उससे ये सारे अमीनो ट्राइपेप्टाइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं when this long chain actually breaks up. So say work out the sequence of amino acids in this by looking at this. ठीक है, remember it's like a puzzle. Remember this. और से क्या, use each tripeptide only once. ये भी शर्त रख ली है कि जो चेन बनेगी ना उसमें ट्राइपेप्टाइड रिपीट नहीं होना चाहिए. To work out the sequence of amino acid. Now the first one is methionine. तो अब met कहाँ पे आ रहा है? This is, तो इसका मतलब है the first one. So I'm going to start making this up. ये पहली होगी, ठीक है, दिस इज नंबर 1, और मुझे लास्ट का भी पता है, लास्ट वन कौन सा है, LYS, तो वो ये होगा, तो एक साइड पे देयर इज गोइंग टू बी MET, देन यू हैव ALA, अच्छा देन यू हैव GLY, एंड on the other side, on the exact opposite side you have अच्छा opposite side पे क्या है, जो आपका C टर्मिनल वाली साइड है, on that side you have ये होना चाहिए LYS वाला, so it's going to be ARG, मतलब LYS होगा, एंड उसने कहा था सी टर्मिनल इससे होगा, so it's going to be LYS VAL and it's going to be ARG. यहाँ तक क्लियर है? आयशा, इज दिस क्लियर? अबू लैला क्लियर है? मरियम? जी सर। Yeah. अच्छा, तो इन दोनों को हटा देते हैं, ये दोनों हो गए, स्टार्टिंग और एंड पता लग गया. अच्छा, नाउ he's also said the tripeptides must not repeat. अच्छा, now one thing that could happen is you have ALA GLY ARG, and you have GLY ARG VAL, फिर GLY ALA, ये क्या GLY ALA, अच्छा ये चीज मैं ऐड करूं अगर यहाँ पे, I mean I already have a GLY, I can have an ALA and I can have a GLY again, ठीक है, इसको मैं ऐड करता हूँ, तो ये जो मेरी ओरिजिनल चेन है ना, इट कुड प्रोड्यूस दिस वन, ठीक है, फिर मेरी जो ओरिजिनल चेन है ना, I mean this amino acid could be produced. अच्छा, फिर मेरी ओरिजिनल चीज है वो पहला वाला अमीनो एसिड भी, ट्राइपेप्टाइड भी प्रोड्यूस हो सकता है, एंड बेस्ड ऑन दिस चेन ये वाला अमीनो एसिड, ये जो टिक लगे हुए ना जिन पे, दे कैन बी प्रोड्यूस्ड, कैन ऑल द अदर्स बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम GLY ARG VAL, this one, ठीक है, the one that I'm pointing to, can this be produced from this chain? GLY ARG VAL, so there's GLY ARG VAL, यहाँ से टूटेगा ना तो ये भी प्रोड्यूस हो जाएगा, and then this one, तो ये भी हो गया, इसको भी टिक कर देते हैं. अच्छा, फिर ये बन सकते हैं इससे ALA GLY ARG, ALA GLY ARG, this can also be produced. और फिर लास्टली ये ALA GLY ALA, वो तो, और GLY ALA, हाँ ये भी हो गया, ठीक है, all of them can be produced from the same chain without any repetitions, ठीक है, ये क्लियर है? अबू क्लियर है? आयशा, मरियम? Yes. Sir, Yes. how did you decide to add ALA and GLY? वो मैंने उसको देख के किया था कि मैं फिर से वो कुछ डिलीट नहीं हुआ, एक सेकेंड. अच्छा, the only thing I अच्छा पहले तो ये ends, I figured out the ends,
ठीक है, वो तो पहले ही पता लग गया था LYS से एंड होना है, तो ये आ गया था, ये वाला जिस पे क्रॉस लगा हुआ है, एंड MET वाज द फर्स्ट वन, तो ये वाला आ गया था। अच्छा, बीच में आई फिगर आउट के अच्छा, I figured out के GLY ARGVAL, so I knew के this should be GLY, ठीक है, but first I thought I should connect this GLY with this one, and I'm going to get this one. But then I figured out that there was a GLY, ALA, GLY as well. So there must be GLY, ALA, GLY with it. And then I can get GLY, ARG, VAL as well from it. Maybe do you get the point? So is it kind of trial and error? But it's trial and error. There's no, I mean, you had to come up without any repetitions. I mean, you could have sort of joined them together in a line, but then there would have been a lot of repetitions, and then the problem would be that there would be other sequences that could also have been produced. Usne specifically kaha tha, there's no other sequence that's being produced. These were the only sequences that were obtained. अगर आप उनको लाइन में लगा Okay. ठीक है, तो फिर तो बहुत ज़्यादा combinations बन जाती. अच्छा, okay, moving on. Give two examples of how interchanging the position of amino acids, ये वो biological diseases वगैरह और amino acids का अब कोर्स में नहीं है. अच्छा, this is spider cell. क्या कह रहा है वो? अच्छा, or Kevlar. अच्छा, this is a polyamide. It's clearly a polyamide. It's double bond ONH. अच्छा, this is your bulletproof jacket. इससे बनती है, क्वेश्चन क्या था? अच्छा, second, वो कह रहे हैं on the diagram draw parts of a second polymer chain showing how bonds could be formed between the chains. Suggest what type of bonds are formed and draw possible monomers for making this Kevlar. अच्छा, तो amides जब भी होंगे, it's going to be hydrogen bonding. So I'm just going to draw a very small part. Okay, let's say there's another amide, ठीक है, which is okay, benzene. अच्छा, उसके दूसरे साइड पे there's, and then there's C double bond O and so on. Achha, okay, this chain is repeating, but this H is positive and the O has lone pairs and it's partial negative, and they're going to attract each other, and you're going to show okay, this is hydrogen bonds. ठीक है, amides के बीच में hydrogen bonds. O has lone pairs, H is partial positive, and they're going to attract each other. And this and this is, these are your hydrogen bonds, ठीक है? So you just have to show this, जो कि हम पहले प्रोटीन्स में भी कर चुके हैं. और फिर मोनोमर्स कहा था उसने, मोनोमर्स बताओ. तो मोनोमर्स क्या, वो एमाइड लिंक्स तोड़ दो. So this is one. अच्छा, remember कि I told you कि when you make an amide, apart from amino acids, when you make an amide, amides synthetically are usually made from acyl chlorides. क्योंकि acyl chlorides थोड़े ज़्यादा reactive होते हैं. Carbon has a stronger positive charge. So that's one of the monomers. And the other monomer is this one. उसके दोनों sides पे ना there's going to be NH2. अच्छा, उसके दोनों sides पे ना there is NH2. So that's your second monomer. और बस ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया. और उसके बाद है कि चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन तो नहीं है इसके बारे में. इज दिस क्लियर? आयशा क्लियर है? मरियम जी सर. ठीक है. अबू लैला क्लियर है? ये हम फिर कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, कल. ओके, टेक केयर. अल्लाह हाफिज.